अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा बच्चों, आज हम आपको 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के वो क्वेश्चंस बताएंगे जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेने हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो सके। पेपर्स में वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। जिन बच्चों ने पूरा साल अपना ज़ाया कर लिया है, टाइम गुजार लिया है, तो कम से कम ये क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे तरीके से करें। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 7 में जो पहला क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है वो कौन सा था? Explain the term oxidation and reduction on the basis of electron concept with one example. Question number 2, define electrochemical cell. Question number 3, what is the function of salt bridge? Question number 4, does aluminium rust? Question number 5, what is electrochemistry? Question number 6, define oxidation reaction with example. Question number 7, define non-electrolyte with example. Question number 8, define reduction reaction with example. Question number 9, write the name do byproducts produced in Dawn cell. Dawn cell में जो products बनते हैं उनके नाम बताने हैं. Question number 10, differentiate between spontaneous and non-spontaneous reaction. Question number 11, differentiate between oxidizing and reducing agents. Question number 12, define strong electrolyte and give example. Question number 13, what is electrolytic cell? Question number 14, how electroplating of tin on steel is carried out. अच्छा बेटा, ये स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आपने इसको इग्नोर करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द शेप ऑफ कैथोड इन नेल्सन सेल? Why it is perforated? Question number 16, differentiate between corrosion and rusting. Question number 17, what type of reaction can take place at anode in electrolytic cell? Question number 18, where do elements flow from zinc electrode in Daniell cell? Question number 19, what happens at cathode in a galvanic cell? Question number 20, names the byproduct produced in Nelson cell. Question number 21, what is meant by galvanizing? Question number 22, define oxidation state. Question number 19, what happens at cathode in a galvanic cell? Question number 20, name the byproducts produced in Nelson cells. Question number 21, what is meant by galvanizing? Question number 22, define oxidation state. Question number 23, what is weak electrolyte? Question number 24, define electrolyte. Question number 25, what is alloy? जी तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 9th क्लास केमिस्ट्री के ये वो शॉर्ट क्वेश्चन थे जो पेपर्स में आ चुके हैं, और आपने बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।